Assalamu alaikum dear students, welcome you all. Class 11 यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स। और टॉपिक जो है आज का टॉपिक है ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स फॉर a reaction to be spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एंड व्हाट आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। आज हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। Spontaneous processes are those processes which occur by itself or by themselves. Those are called as the spontaneous processes. Those processes are feasible processes. While as non-spontaneous processes are those processes which do not occur by themselves are called as the non-spontaneous processes. They are not feasible. Now what are the various factors which are responsible for a process to be spontaneous? उसके लिए हमने क्राइटेरिया पढ़े थे। नंबर फर्स्ट, दैट्स टेंडेंसी टू हैव द मिनिमम एनर्जी एंड टेंडेंसी टू हैव द मैक्सिमम रैंडमनेस। आज का जो टॉपिक है दैट्स ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। कब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है, कब नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, it depends upon the resultant of those two factors. Number first factor जो था हमारे पास that is tendency to have minimum energy, and number second tendency to have maximum randomness. These two factors are responsible for a process to be spontaneous or non-spontaneous. अब ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स, ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस हो सकती है, कब नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फैक्टर्स. खाली tendency to have the minimum energy is not a sole criteria for this process to be spontaneous. Similarly, टेंडेंसी टू हैव द मैक्सिमम रैंडमनेस ये भी सोल क्राइटेरिया नहीं है स्पॉन्टेनिटी के लिए। स्पॉन्टेनिटी किस पर डिपेंडेंट है, ओवरऑल इन दो फैक्टर्स का जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंडेंट है। सो आज हम यही पढ़ेंगे दैट्स ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। टेंडेंसी फॉर द मिनिमम एनर्जी उसको हम डिनोट करेंगे बाय ई, and tendency for the maximum randomness that is denoted by the letter R, and overall driving force of the reaction is denoted by number third overall driving force for a process is denoted by D. अब हम ये बताना है कि ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस हो सकती है, कब नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फैक्टर्स. ओवरऑल the criteria, first criteria that's tendency to have the minimum energy, and number second criteria that's tendency to have the maximum randomness. इन दो के मैग्नीट्यूड पर ये डिपेंडेंट है. That is that which is called as the overall driving force of a process to be spontaneous, and that is denoted by that D. Now, अगर एनर्जी फैक्टर ये फेवर करता है स्पॉन्टेनिटी को, इफ नंबर फर्स्ट केस हम इस पर पढ़ेंगे दैट्स द फर्स्ट केस फर्स्ट. इफ अगर ई फेवर करता है, ई फेवर्स, दैट इज ई कहता है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, एक प्रोसेस होनी चाहिए. नंबर फर्स्ट, एंड और also favors
That means system की जो tendency है to have it has a tendency to have the minimum energy and also it has a tendency to have the maximum randomness. That means ये factor और ये factor दोनों factors add होते हैं, propose करते हैं for a process to be spontaneous. They favor both the process, both the two factors or both the two criteria favors for a process to be spontaneous. Then overall process जो है that is spontaneous. Overall driving force जो है that is in the forward direction and hence the process is spontaneous. And D favors overall driving force is in the forward direction. D is in the forward direction. That is D. It favors and overall driving force जो है इन दो का that favors for a process to be the spontaneous and hence the process is and the process is spontaneous. इसका मतलब ये है कि टेंडेंसी टू हैव द फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमारे पास है दैट इज टेंडेंसी टू हैव द मिनिमम एनर्जी वो फेवर करता है स्पॉन्टेनिटी को. रैंडमनेस फैक्टर वो भी फेवर करता है स्पॉन्टेनिटी को. द ओवरऑल प्रोसेस क्या हो सकती है दैट इज द आल्सो द स्पॉन्टेनियस दैट इज स्पॉन्टेनियस क्योंकि डी का जो मैग्नीट्यूड है इट डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ द दीज टू. ये फेवर करता है ये भी फेवर करता है एंड हिंस ओवरऑल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. नंबर सेकंड फैक्टर जो है इफ दे बोथ अपोजेस if tendency to have the minimum energy and tendency to have the maximum randomness they opposes both factors oppose then the overall process is non-spontaneous. Case second, if E opposes that it does not favor the process to be spontaneous that means इसका जो डेल्टा एच है दैट इज पॉजिटिव. इसका डेल्टा एच जो है फर्स्ट केस में डेल्टा एच जो है इसका दैट इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज रैंडमनेस फैक्टर जो है दैट इज पॉजिटिव एंड hence they both contribute towards the spontaneity of the process. And in the second case if E factor that is tendency to have the minimum energy it opposes it does not favor the process to be spontaneous and R factor it also opposes for a process to be spontaneous. The overall magnitude जो है इन दोनों का that does not favor the process to be spontaneous. तो D जो है इनका resultant that opposes and the processes is non-spontaneous. This is the second case regarding the spontaneity of a process, whether the process is spontaneous or whether the process is non-spontaneous. Now the third case. अब third case क्या है? अगर E favor करता है और R oppose करता है, लेकिन at that time the process is either spontaneous or non-spontaneous depending upon the magnitude of the favoring factor. If the magnitude of the favoring factor is more than the opposing factor, the process is spontaneous, and if the opposing factor magnitude of the opposing factor is more than that of the favoring factor, the process is non-spontaneous. If case third, if E favors or opposes then overall and magnitude of the E is greater than or then D is in the forward direction and process is spontaneous. टेंडेंसी टू हैव द मिनिमम एनर्जी फैक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है. ये फेवर करता है प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फीजिबल प्रोसेस को. वाइल एज रैंडमनेस फैक्टर जो है वो अपोज करता है लेकिन रैंडमनेस फैक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द tendency to have the minimum energy. And hence if it is magnitude favoring factor the magnitude of the favoring factor is more than that of the opposing factor the overall driving force is in the forward direction and process is spontaneous. Now if this is a
if the magnitude of the favoring factor is less than that of the opposing factor, at that time the process is non-spontaneous. B, if E favors or opposes, but magnitude of E is less than R, overall driving force is in the backward direction and the process is non-spontaneous. Overall process is non-spontaneous. Now this is the third case. Whether the process is spontaneous or whether the process is non-spontaneous, it depends upon the magnitude of the favoring factor. If the magnitude of the favoring factor is more than that of the opposing factor, the process is spontaneous. And if the magnitude of the favoring factor is less than that of the opposing factor criteria, then the process is non-spontaneous in nature. Now, if E, that's fourth case. फोर्थ केस जो है हमारे पास, फोर्थ केस है इफ ई, अगर ई अपोज करता है और आर फेवर करता है, देन process is spontaneous or non-spontaneous depending upon the magnitude of these two factors, and R is greater than E, लेकिन magnitude of the favoring factor जो है that is more than that of the opposing factor, and hence D जो है that is in the forward direction and the process is spontaneous. And B, now if the magnitude of the opposing factor is more than that of the favoring factor, इस प्रकार E का magnitude जो है वो ज़्यादा है as compared to that of the opposing factor, the overall driving force is in the backward direction and the process is non-spontaneous. This is A, and number second we have B, that is if E opposes or favors, but R is less than E, then overall driving force is in the backward direction and the process is non-spontaneous. So these are the various cases whether the process is spontaneous or non-spontaneous. It depends upon the overall tendency of these two factors, that is the tendency to have the minimum energy and tendency to have the maximum randomness. इनका जो magnitude है, whether they are both favoring at that time the process is spontaneous, whether both are opposing each other at the process is non-spontaneous, and if one favors other opposes, the process is spontaneous depending upon the magnitude of the favoring factor, and if the magnitude of the favoring factor is less than that of the opposing factor, the process is non-spontaneous. This was the overall driving force for a process to be spontaneous or non-spontaneous. अब हम दूसरा जो सब टॉपिक इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, that is the entropy and entropy change. Entropy किसे कहते हैं? Entropy, that is denoted by the letter S. Now entropy है क्या? It is the measure of randomness or disorder in a system. किसी भी system में जो disorder होता है, जो randomness होती है, उसको हम कहते हैं entropy. उसके that measure of that randomness or the disorder is called as the entropy. So it is the measure of randomness. जो हम मेजर करते हैं रेंडमनेस और डिसऑर्डर किसी भी सिस्टम में, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी. मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर इन ए सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी. सपोज हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. We have the molecules of any substance here.
In case of solids, they are closely packed, so there is perfect arrangement and there is no disorder in the system. लीस्ट एंट्रोपी होती है इसकी, क्योंकि लीस्ट एंट्रोपी क्योंकि रैंडमनेस इसमें नहीं है, एंट्रोपी डिसऑर्डर नहीं है. अब गैसियस स्टेट में आप लीजिए, द मॉलिक्यूल्स दे आर रैंडमली मूविंग, मैक्सिमम रैंडमनेस इज देयर, सो इट हैज अ मैक्सिमम एंट्रोपी. एंड इसी तरह से लिक्विड स्टेट, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं लूजली पैक्ड as compared to that of the solids, but compressed as compared to that of the gaseous. So it is the entropy of the liquids is between the solids and the liquids. इनकी भी एंट्रोपी होती है लेकिन लेस एंट्रोपी. सो एंट्रोपी है क्या? इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर. किसी भी सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है या कितना रैंडमनेस है किसी भी सिस्टम में, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी. एंड एंट्रोपी मैंने एग्जांपल आपको दी, दैट इज द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. गैसेस में जो एंट्रोपी होती है दैट्स मैक्सिमम एंट्रोपी, while as in case of the solids we have the least entropy. The change in the entropy, the change in the value of the entropy, किसी भी सिस्टम में जो एंट्रोपी चेंज होती है उसको हम उसके वैल्यू में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं एंट्रोपी चेंज. Change in the value of entropy is called as the entropy change. Now we have what is entropy? It is the measure of randomness or disorder of a system. अब किस में ज्यादा होती है randomness? गैसेस में ज़्यादा रेंडमनेस होता है, सो दे हैव द मैक्सिमम एंट्रोपी. सॉलिड्स होते हैं उनमें लीस्ट एंट्रोपी, उनमें लीस्ट रेंडमनेस होता है, लीस्ट डिसऑर्डर होता है, सो दे हैव द लीस्ट एंट्रोपी. वाइल एज लिक्विड्स में एंट्रोपी होती है, लेस एंट्रोपी होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द गैसेस, वाइल एज मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सॉलिड्स. नाउ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी इज कॉल्ड एज द एंट्रोपी चेंज. चेंज इन इट्स वैल्यू. अगर हम एंट्रोपी का वैल्यू चेंज करेंगे, कैसे करेंगे चेंज वो हम आगे देखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज द एंट्रोपी चेंज. एंट्रोपी चेंज दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस. सपोज अगर हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें मॉलिक्यूल्स है, सपोज इसमें ए मॉलिक्यूल्स है, इसकी एंट्रोपी S1 है. अगर इस सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है फ्रॉम द सराउंडिंग, सो देयर इज चेंज इन इट्स एंट्रोपी. दिस चेंज इन इट्स एंट्रोपी, देयर इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी. सो दिस चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी इज कॉल्ड एज द एंट्रोपी चेंज. कैसे हो गया चेंज? क्योंकि इसकी एंट्रोपी, पहले जो एंट्रोपी थी दैट वाज S1. When it absorbs the heat, these molecules they gain the energy, they start moving more and more randomly, and hence the value of the entropy changes, and that change in the value of the entropy is called entropy change, and that is denoted by del S. So change in the entropy, change in the value, the change in the value of entropy is called entropy change. This entropy change, it is given as delta S, is given as the summation of the entropy of products minus summation of the entropy of the reactants. अब जो एंट्रोपी चेंज है, like internal energy and the enthalpy, it's an extensive property and it is a state function. Number first, it is an extensive which depends upon the quantity of the system. It's an extensive property. And number second, it is a state function. नाउ एंट्रोपी चेंज जो है वो हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंट्रोपी चेंज, सपोज आई हैव ए सिस्टम, suppose it has some entropy and it absorbs the heat from the surrounding. It possesses the molecules, it has its entropy. Suppose it has its entropy S1,
when it absorbs heat from the surroundings reversibly and isothermally. At that time the entropy change, there is change in the value of the entropy, जो मैंने अभी आपको कहा, that is called as the entropy change. अब entropy में change कैसे आ गया? When the system it absorbs the heat reversibly and isothermally. Isothermally divided by the absolute temperature. This is the definition of the entropy change. So entropy change है क्या? It is the amount of the heat absorbed or evolved by the system it is the amount of the heat absorbed by the system isothermally and reversibly divided by the absolute temperature is called as the entropy change. उसको entropy change की जो ये है mathematical expression that is given as delta S is equal to Q divided by T reversible amount of the heat. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक सिस्टम एक कंसिडर किया है, उसमें मॉलिक्यूल्स है. व्हेन दे एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, उनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है एंड दे स्टार्ट मूविंग मोर एंड मोर रैंडमली and there is change in the entropy of the system, which is change in the value of the entropy and which is called as the entropy change. And ये कब हो गया? When the system it absorbs the heat from the surroundings. That is the definition of the entropy change. So entropy change may be defined as the amount of heat absorbed by the system reversibly and isothermally divided by the absolute temperature. So it is the amount of the heat absorbed by the system isothermally and reversibly divided by the absolute temperature. टेम्परेचर का रिलेशनशिप जो है एंट्रोपी के साथ, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप. लो टेम्परेचर पर अगर हम सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे, एट लो टेम्परेचर एंट्रोपी इज मैक्सिमम व्हाइल एट हाई टेम्परेचर द एंट्रोपी इज मिनिमम प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज सेम. एट दैट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? लो टेम्परेचर पर एंट्रोपी ज़्यादा होती है, हाई टेम्परेचर पर एंट्रोपी कम होती है. That is regarding the entropy change. Now the units of the entropy change. अब इसका क्या यूनिट है? हीट का क्या यूनिट है? That is calorie. And temperature का क्या है? Kelvin per mole. So it is unit is calorie per Kelvin per mole, or it is joule per Kelvin per mole. This is the unit of entropy. So entropy है क्या? Measure of randomness or disorder of a system, while as we have we have gases which have the maximum entropy, while as liquids have less entropy, and the solids they have the least entropy. Then we have the entropy change. Entropy change in the value of the entropy is called as entropy change. कैसे होता है? अगर एक सिस्टम सराउंडिंग से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा हीट from the surrounding, there is change in its entropy. That entropy change is given as the Q reversible divided by absolute temperature. Q entropy में change आ गया. क्यों? क्योंकि इस system ने absorb किया है heat from the surroundings, which leads to the change in the value of entropy, which is called as entropy change. So mathematically entropy change किसके बराबर है? Q reversible divided by the absolute temperature. So हमने ये define किया है entropy change. And now we have the units of the entropy change. Now another point जो आप इसमें याद रखोगे, that is the entropy जो है, that is a state function. अगर हम एक साइक्लिक प्रोसेस लेंगे, साइक्लिक प्रोसेस का जो एंट्रोपी चेंज होता है दैट इज इक्वल टू द जीरो. अब हमें ये प्रूव करके देना है कि ये स्टेट फंक्शन है एंड इट्स ओवरऑल एंट्रोपी चेंज दैट इज इक्वल टू द जीरो. नंबर सेकेंड, दैट इज एंट्रोपी. Entropy is a state function.
फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, अगर हम एक साइक्लिक प्रोसेस लेंगे उसकी एंट्रोपी चेंज जो है दैट इज इक्वल टू 0। अब वो कैसे 0 के बराबर है? सपोज वी टेक ए system B and it is placed in close contact with that is heat reservoir. Suppose this system it absorbs, suppose it has the entropy that's called the S, it has its entropy that's called the S, and hence it absorbs heat from the surroundings from this heat reservoir. Its entropy is entropy change that's called the delta S1 is equal to that is S1 is equal to entropy that's called the Q reversible divided by the absolute temperature. Now we have equal, it absorbs the heat from the, so it is plus sign here, while as this system it loses same amount of the heat because the amount of the heat absorbed by the system is equal to the amount of the heat lost by the reservoir. It is now here, this reservoir is our surroundings. Its entropy is equal to the S2 is equal to minus Q reversible divided by the temperature, absolute temperature. टोटल एंट्रोपी चेंज S1 जो है किसके बराबर है? S1 plus S2. Total entropy of the system plus entropy of the surroundings, that is the total entropy change. And that total entropy change delta S1 is equal to Q reversible divided by absolute temperature plus इसका वैल्यू क्या है? दैट्स इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, दिस एंड दिस विल कैंसल आउट एंड डेल्टा एस इट बिकम्स इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने एक सिस्टम लिया बी, इसकी एंट्रोपी थी सपोज एस. Now this system it absorbs heat. Due to heat absorption of the heat there is extension. यहाँ पर वॉल्यूम जो है सिस्टम का इट इंक्रीजेस फ्रॉम V1 to V2. क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब की एंड मॉलिक्यूल्स दे गेन द एनर्जी. सपोज हमने इसको फिट किया है एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस and weightless piston. It absorbs heat from the surroundings. These molecules they gain the kinetic energy and they start pushing the piston upwards, and hence there is increase in the volume from V1 to V2, and hence its entropy is given as Q divided by the absolute temperature. लेकिन इसने यहाँ पर heat को loss किया, that the entropy is given as minus times. This is the total entropy of this system plus surrounding is given as the sum of the entropy of the system plus sum of the entropy of the surrounding, that is the delta S1 is equal to S1 of the system plus S2 of the reservoir, that's called the 0. Similarly, if the reservoir now it absorbs heat, this system it gives heat to the surroundings, the reservoir, then entropy of the system, entropy of this system, that is called the S, suppose that's called the S1, it gives heat to that of the heat reservoir. Its entropy became minus P reversible divided by the absolute temperature, while as reversible जो ये है reservoir it absorbs the heat, it becomes plus and divided by the absolute temperature. उसकी वजह से क्या हो गया, जो ये system है it undergoes contraction, its volume it decreases from the V1 to V2. Suppose it decreases from V1 to V2, then it is heat to the heat reservoir, it is entropy it gets decreased, while the entropy of the reservoir it gets increased. Total entropy जो है that is delta S2, that is equal to minus Q reversible divided by the absolute temperature plus Q reversible divided by the absolute temperature. This and this will cancel, that is delta S2 is equal to 0. Total entropy change, अब ये साइक्लिक प्रोसेस पहले एक्सपेंशन हो गया, फिर कंट्रैक्शन हो गया, फिर एक्सपेंशन, फिर कंट्रैक्शन, it becomes a cyclic process. The overall entropy of this cyclic process, that is delta S is equal to delta S1 plus delta S2.
that is equal to 0. Total entropy change, that's equal to 0. The total entropy of the this system plus total entropy of the surroundings, that's equal to 0. ये जो साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर हो गया, दैट इज द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द जीरो. फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज, दैट इज कॉल्ड जीरो, which proves that it is a state function. This was all about the entropy change, and entropy is an extensive property and entropy is a state function. इसमें important क्या है? Definition of the entropy, that is the what is entropy? It's the degree of randomness or the disorder of a system. Change in its value is called as entropy change, and then we have the expression, mathematical expressions for the entropy change. This was all about the entropy and the entropy change. In the next video lecture, we will discuss the free energy and free energy change. Thank you so much.